Yeah, so hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is the second video of the 10-day challenger series, whereby I will solve two mocks each day. So without any further delay, let's get started. It's a piece of cake means it's easy. My friends and I viewed the Halley's Comet in passive voice will be. The Halley's Comet had been viewed by. The Halley's Comet was viewed by me and my friends. Halley's Comet was viewed by I and my friends, me and my friends. I think this is the answer. Their final exam from commences by or commences from? Commences by, I think. The child has been missing since yesterday. Natul has both cows and pigs in the farm. In the above sentence, the word and is cows and pigs. Conjunction, no. Interjection. What is the antonym for preposterous? I don't know. Let's not waste here time. In the passage below, there are four sentences in jumbled order. Okay. Once known for his extreme nationalist and anti-immigrant views, Mr. Navalny acted uh, into the embodiment of the anti-Kremlin. Navalny, Mr. Putin has found the strongest political opponent in Syria and detained several times. The course has been launched against him. TRSQ. Identify the part of the sentence that contains a grammatical error. Aerosmith was a very popular band in 1960s. थ्री होगा यहाँ पे एक शायद apostrophe आएगा. It's going to be all right for the guys who have studied year round. Those होगा I think. And tomato, beetroot, cabbage, carrot. टोमेटो जमीन के ऊपर उगता है, बीटरूट नीचे, कैबेज नीचे, कैरेट भी नहीं. टोमेटो. There is no one vignette about the government's handling of the pandemic that says it all. But there will always be a broken place in my heart for the fact that at the end of the first lockdown, the government opened the pubs, the schools. Hey, give the Johnson administration a break. They've only had 3.5 months to think about it, which
The likes of Gavin Williamson had instead spent not thinking about how to handle the looming exam results fiasco. Whether ministers will make more human and intelligent choices this time around for the some student various stages of crisis is as yet tantalizingly as unclear. The president, the precedent set by their dealing with Marcus Rashford suggests that the government needs to make the same mistake many more times than average primary school people before it learns. And so to Rashford, whose success in forcing government U-turns is increasingly infuriating backbench Tories MPs, particularly those who represent the so-called red wall from school meals to food hampers to perhaps a permanent universal credit of top of the footballer and those their frustration is broadly summarized by the question: why does the government keep losing against them? Once the possible eliminator, they might have to face the improbable truth that Rashford is simply better at it than them. The government has found it so difficult to know how to play Rashford for reasons that can only be guessed at. They're largely settled into rather excruciating forms of sycophancy. On each of their unsuccessful outing against Manchester United forward so far, ministers have fallen over themselves to salute him, to be inspired by him, and to judge he is doing an incredible job. At the same time as voting against said incredible job. Last week, the Prime Minister further formalized the admiration, declaring that in comparison with the Labour leader, Rashford is doing quite an effective job in holding the government to account. Johnson using his own Dickensian incompetence as the setup to some Westminster joke is certainly innovative. In private, however, there are reports that the false bonhomie is failing. The Tory MP's education WhatsApp group has lit up with discontent on both this issue and the continuing performance art piece called Gavin Williams and several MPs are said to have accused the government of dancing to Rashford's tune or giving in to him, with the fact that he is a millionaire footballer, either disparingly or in ways that suggest his success disqualifies him from speaking on the subject. Well, now it's something somewhat confusing to find conservatives practicing both and political that decrease aspiration. Why do they hate football so much, given that the top flight is an engine of social mobility that levels up a lot of talented and dedicated working class men into millionaires? Perhaps the answer is in the question. It certainly can be that millionaires are per se the sort of people whose conservative politicians believe shouldn't be listened to. To all huge swaths of conservative policy have been formulated as a direct result of listening very hard to them. And over the past 10 months of the pandemic, huge numbers of incredibly lucrative private contracts have been outsourced to them. यार कुछ वैसा समझ में नहीं आया. What at best can be inferred about the profession of Kevin Williamson, a Manchester United footballer, I think. Uh, फिर से एक बार पढ़ते हैं. It should not take much time. No one will not.
फुटबॉलर तो रशफोर्ड है। फिर परफॉर्म In private, however, there are reports that the false bonhomia is following the tourism piece. Amiability. What would be the passive voice of the following sentences? Are the school teachers solving all of your doubts? Nautical, the teacher confirmed that not need to give, do not need to give. Hmm. The circumradius of an isosceles triangle is 2 root 2. Find the area of the triangle. Circumradius. Circumradius means the circle outside the triangle. So circumradius, cap, capital R is 2 root 2 R equals 2 root area of the triangle. That means 2 root 2. This is 2 root 2, 4 root 2. अच्छा isosceles right angle triangle यार सही से नहीं क्वेश्चन पढ़ा isosceles right angle triangle is 2 root 2 so 2 hypotenuse this is
I go by 2. By 2 hy by 2 equals to 2 root 2 h by p equals to 4 root 2. Hypotenuse 4 root 2. Let us go 4 root 2 square. 4 is to 26 to 8. 8 mark move. Absolute difference degrees of external angle of regular hexagon and the internal angle of a regular pentagon is. External angle of regular hexagon कितने side? 6 side. External angle of regular hexagon क्या होगा? 4 into 22 by 6 into 7, that is 88 by 42. That is by 21. And that means 44 by 21 is the interior angle. That means interior angle 180 minus 44 by 21. So yeah, or interior angle of regular pentagon is 503 into 22 by 5 into 7. That is by 35. ये बन गया 40 3780. 3780 less 44. Even that 3736 by 21. 37376 by 21 less 66 by 35 equals to 3 एक सात पाँच 373736 into 5, that is 3 5 18680 less 18680 less 105 35 is 105. 66 into 3 is 66 into 190 198 8680 18680 198 1882 by 100 by गलत जा रहा है कहीं पे. Skip. The perimeter of a triangle is 49, then the number of triangles with integral sides possible is p. What can we say about p? 49, right? तो 49 का बनता है 49. Number of triangles when perimeter is given is p plus 3, 49 plus 3 by 48 whole square. 49 plus 3 is square by 48, 52 into 52 by 48. 4 2 2 4 6 बचे 12 2 6 12 24 13 2 26 2 3 6 2 1
13 to 13 169 by 3 169 by 3 169 by 3 5 15 15 19 50 57 greater than 40. The size possible is P. गलत तो नहीं किया 14 P plus 3 का होल स्क्वायर 49 plus 3 का होल स्क्वायर 49 plus 3 का होल स्क्वायर 49 52 by into 52 by 48 तो मैंने किया यार 52 into 52 by 48 যদি চাই তুই দুই চার 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 12 দুই 6 12 12 24 2 13 দুই দুই চার 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 1 2 12 দুই 6 12 2 6 12 2 3 6 2 13 13 to 13 by 3 yeah 169 by 3 that is 56 greater than 40 mark more 50% of it 50% of the people residing in town A are adults 15% of the adults are females. What is the number of male adults as a percent of not adults? अच्छा टाउन ए में कुछ लोग रहते हैं लेट्स से 100 लोग रहते हैं उसमें से 50 लोग 50 people residing in town are adults 50 adults that means बाकी 50 children 15% of the adults are females 50 का 15% क्या होता है 50 का 15% 50 का 10% होता है 5 और 50 का 10% का 5 का हाफ होता है 2.5 2.5 plus 2.5 that is 7.5 तो 7.5 जो है वो फीमेल है 7.5 that means 50 less 7.5 that is 50 minus 7 is 43 42.5 है male. What is the number of male adults as a percentage of people who are not adults? Male adults who are not adults 42.5 by 50 those 42.5 85 mark shopkeeper marks the price of his good by 300%. Then offers two successive discount of 50 and 50. Find the overall profit and loss 100 into 300 by 100 into successive discount. That means 2 1 by 2 into 1 by 2. That means 300 by 4. That is 75. 25% loss. Sorry. The loss was 300% by 300, 400, 100. No profit, no loss. A certain sum of money invested in simple interest becomes twice of itself in 5 years. A certain sum of money invested in simple interest becomes twice of itself. That is P into 5 to 10 times of itself. मतलब 10 साल में बनेगा 4 टाइम्स सॉरी 10 साल में बनेगा 3 टाइम्स 15 साल में बनेगा 4 टाइम्स 20 साल में बनेगा 5 टाइम्स 25 साल में बनेगा 6 टाइम्स 30 में बनेगा 7 35 40 8 9 45 45 mark move. A piece of work can be done by 50 men working for 10 hours per day in 45 days. M1 into D1 into T1
by the same work needs to be done in a span of 30 days by 40 men working. What is the additional time? Acha, by W1 equals to 30 days 40 men T2 टाइम बाई W1। तो ये बन गया हमारा T2 इक्वल्स टू 50 into 45 into 10 by 30 into 40। तो ये हमारा बन गया 1.5 into 3 plus 1.5 37.5 by 2 तो ये approximately बनता है 38 में तो 8 34 19 19 तो 8 पॉइंट समथिंग 8 तो पहले 10 घंटा था अभी 18 पॉइंट समथिंग बन गया तो 8 हाँ the income of A and B are in the ratio 4:5 incomes of A and B are 4:5 A and B ratio 4:5 expenditures are in the ratio 5:4 the savings are in the ratio 1:2 1:2 अच्छा A B income expenditure saving income are in the ratio 4:5 4x 5x expenditure in the ratio 5y 4y savings are in the ratio 1:2 that means z 2z and the ratio of the absolute difference between the incomes and the absolute difference of the expenditure. Find the ratio of the absolute difference between the incomes and absolute difference of the expenditure. ये करने में यार टाइम लगेगा इसको skip करना समझदारी है. Number of even factors of 2q total number of factor is 4 into 5 into 6 that is 120 इसमें से even factors है those odd factors minus 1 sorry total factors minus odd factors इसको skip कर देंगे यार और skip log 2 plus log 4 plus log 8 plus log 16 plus log 20 log 2 equals to x इसको भी टाइम लगेगा find the number of ways अच्छा वेन डायग्राम है इसको कर लिया जाए in a government survey it was found that 50 people preferred only vaccine A vaccine B vaccine C A B C this 150 people preferred only vaccine A 50 only vaccine A 75 people preferred only vaccine B 75 only vaccine B no person preferred only vaccine C only vaccine C 0 also total 150 people preferred at least two vaccines 150 the total population surveyed 500% people surveyed did not prefer any vaccine acha that means 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3 equals ये तीनों मिला के 150 this x then this is 150 minus x so 1 half
80 plus 75. So borrow 125. 125 plus 2 into 150 minus 3x. 125 plus 2 और 3 मिला के है 50 plus 500. Find the area enclosed by the graph. Income A B C D E, expenditure A B C D E. ठीक है. If the total income of is rupees 1 lakh and the total expenditure is this, what is the difference between B and C savings? If the savings of C is 0 equal to 0, find the total ratio of total. ठीक है. टोटल अच्छा अच्छा, मतलब पहले टेबल बनाना पड़ेगा. A B C D E, A B C D E, income, expenditure, savings. अच्छा, टोटल इनकम का एज ए परसेंटेज है ना. ठीक है. If the total income is 110 lakh, ठीक है, and the total expenditure is 4,80,000, what is the difference between B saving and C saving? B income कितना है? B income equals to B share of income कितना है? 10%. तो ये हो बन गया हमारा 10 लाख का 10% होता है 1 लाख. और 20 एक्सपेंडिचर इज 4,80,000 का 10% 48,000. तो ये हमारा बन के आता है 1 लाख में से 40,000 गया तो बचा 52,000 सेविंग्स. What is the difference in B savings and C savings? अब C's income is 25%. That means 2,50,000. और C's expenditure is wait. B's savings C savings C है 12%. तो मतलब 1,20,000. और C का एक्सपेंडिचर है 25%. 4,80,000 का 25%. That is approximately 4. That is 4,80,000. Yeah. 1,20,000. 20,000.
तो ये 0 52,000. If the savings of C is equal to 0, savings of C is 0, that means 12% of X minus 25% of Y. Oh, अच्छा 0.12X equals to 0.25Y. तो find the ratio total income to total expenditure. तो total income to total expenditure. तो X is to Y बनेगा 25 is to 12. 25 is to 12. Mark move. If the total income of is rupees 5 lakh, ठीक है, and the total expenditure is 2 lakh 40, what is savings of B? Savings of B is 5 lakh का 10%, तो बन गया 50,000 minus 2,40,000 का 10%, that means 24,000. तो ये बन गया हमारा 26,000 मार्क मूव. और ये वाला जल्दी जल्दी कर लेंगे. उसके बाद A, B, the following marks scored by 5 students in 4 different subjects. Mean marks of a student is the total marks scored by him by different number of subject. Range of marks scored by student is difference between the highest and lowest marks scored by him. Based on the correct above information, answer the question. Who among the following has the highest mean? ठीक है, फिर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा बॉस. 98, 97, 91, 78. নাটকের 9 সাথে 9 দিয়ে 9 10 16 16 16 আর 8 16 16 10 26 24 আর 4 থেকে 2 7 9 9 দিয়ে 18 9 দিয়ে 27 36 364 by 4 equals 9 36 4 4 91 average. B का 100 189 79 289 और 79. 18 থেকে 1 7 থেকে 8 8 দিয়ে 16 6 থেকে 1 থেকে 3 368 by 4, which is 4 9 36 4 2 8 92. C का एवरेज है 95 99 495 95 19 94 99. that is not 13 5 9 10 11 13 13 14 15 16 17 18 থেকে 1 9 10 9 19 9 28 28 plus 9 28 plus 9 is 22 28 38 37 37 378 by 4 is 4 9 36 4 9 36 34 18 4 दिया 4 ने 12 4 16 4 4 16 94.xx 94.xx. D का देखते हैं. D का 89 89 95 98 91. तो टोटल में आता है कि 9 है 5 है 9 10 है 12 14 14 9 14 10 24 23 से 3 है तक 2 9 11 9 20 9 29 8 39 37 373 by 4 is 4 9 36 4 9 36 36 সাথে 1 13 4 3 12 93.xx. तो हाईएस्ट मीन है सी का. नहीं, ई का तो अभी कैलकुलेट किया ही नहीं. 99 90 87 89 9 तो 9 18 18 19 20 22 23 24 25 2 8 10 8 18 18 2 36 365 by 4, that is 4 9 36 4 91. C mark move. The lowest range marks among the students. Range marks. Highest score minus lowest score. Lowest marks among the students. A का है 98 minus 78. 98 minus 78, that is 20. B का है 100 minus 79, that is 21. C का है 99 minus 90, that is 9. D का है 98 minus 89, 98 89. तो ये बन गया 9. और E का है 99 minus 87, 89 10 12 12. लोएस्ट बन गया
रेंज बनता है हमारा 9 C और D. What is the absolute difference between the range of marks of the person who has scored the highest and lowest total score? Absolute difference between the range of the marks of the person. या टोटल स्कोर हाईएस्ट टोटल स्कोर है हमारा ए नहीं 364 368 378 ऑफ कोर्स 378 378 मेरे को जो सी स्कोर किया उसका रेंज है 9 और जो लोएस्ट स्कोर किया है 364 yeah A is the lowest score 20 21 is 9 is I think 11 should be the answer 11 mark move. अब DILR को बढ़ते हैं ये वाला यहाँ पे आ जाए फिर यहाँ पे यहाँ पे आएगा अब की बार और 4 आएगा यहाँ पे आएगा 4 आएगा 8 फ्रेंड्स साढ़े पापा इतना बड़ा आ गया पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसको बाद में करेंगे for a machine input of the word Lilliput gives an output 2 2 3 3 4 4 4 5 Nitya gives output 1 2 3 4 5 then Tanya gives the output 1 1 4 3 5 Tia gives the output 2 3 Italy अच्छा अच्छा I P O T N I T I A T A N Y A 2 2 3 4 4 4 5 1 2 3 4 5 1 1 4 3 5 तो स्किप स्किप अच्छा एक काम करते बड़ा बड़ा करके रखते थे इसमें यार सिर्फ 3 ही है इसको कोडिंग डिकोडिंग इसको करना है Sham bought tickets to Hyderabad. Hyderabad is the capital of Telangana. Both are independent states. The course follow course in the following course statement is given by 3 assumptions. Number 1 and 2 consider the following and following assumptions and decide which of the following is implicit. I intend to attend Taylor Swift's concert. I like Taylor Swift only. It's a great personality. इसको skip word number 3 9 19 3 9 33 51 डैश 3 से 9 गया हमारा 6 9 से 10 10 19 से 33 33 19 20 20 13 14 14
73 mark move and it moves 30 units. अच्छा. And ant moves 30 units north, 30 units north, followed by 40 units east. Units east. Then he turns left and moves 40 units. 30 minutes north, 30, 40. Then he turns left and move 40. Turns left and move 40. Then turns right and move 200. Turns right and move 200. How much distance does an ant have to walk to reach the starting point if he starts traveling in straight line towards home? How much distance does an ant have to walk to reach the starting point? अच्छा, ये है 3450 और ये है हमारा 200 square 4000 40,000 minus 1600, that is 30 38,400. रूट इसका 384 का रूट क्या है? 384 is I think 384 does not fall under any square root. 38400. 190 plus 250. Yeah, 20 for 284 38400 किसका स्क्वायर? 384 एक के 5 5 6 2 5 5 5 3 15 हाँ 2 into 2 into 2 8 into 2 16 into 5 85 80 root 6 right. तो 80 root 6 बनता है हमारा root 4 है 2 root 9 है 3 2 और 3 के बीच में कहीं 2.5 पकड़ लेते हैं तो फिर यार 16 200 के आसपास बन रहा है 250 के अराउंड बन रहा है. हाँ Ram works for 9 days and takes a day off. Ram works for 9 days and takes a day off. 9 days काम करते फिर एक दिन ऑफ करते. Ram works start from Monday after how many minimum weeks should we again start working for 9 consecutive days starting work? क्या? Ram works on 9 days and then takes a day off. Okay, Ram starts working on Monday after how many minimum weeks should we again start working for 9 consecutive? पता नहीं. Bus to Ramgarh comes at interval of 1 hour starting from 9 a.m. till at what time to leave the bus when the bus 18 and 32 hours. By washing out the bed in the minute time was 4:15 and no clock. But Ram jogs around the square park and takes 15 minutes to complete around. His friend Sham completes a round of circular track 25 minutes.
Jogs around the square park and takes 15 minutes to complete one round. Round 15. Round 15. His friend Shyam completes a round of a circular park in 25 minutes. Shyam 25. Both parks have exactly one common point. Both friends start running from the compound. After how many minutes will they meet? तो ये बन जाता है हमारा 15 और 25 का आई थिंक एलसीएम 15 25 35 3 15 5 5 25 75 minutes. We sit the works have continuously and complete once to each one to receive one. अच्छा A is 168, B is 120 and C is 210. So that on any day only two people can work. No person can work 3 days consecutively. The project will complete on which day? यार ये तो टफ है. Ram starts moving from P to Q at 10 a.m. P to Q 10. At 12 a.m. Sita starts from Q towards P. They cross each other at R such that it is equidistant from P and Q. Now what can be the ratio of speed of Sita to the ratio of speed of Ram? मतलब सपोज जर्नी को हमने P का स्पीड है x और Q का स्पीड है y. जर्नी है सपोज 100 किलोमीटर. तो 2 घंटे में उसने 2x किलोमीटर कवर किया. डिस्टेंस लेफ्ट इज 100 माइनस 2x. 100 माइनस 2x मीट करने में टाइम लगा x प्लस वाई इंटू अब 100 माइनस 2x को इक्वल वो मैं किया मतलब 100 माइनस 2x by 2 by 2. Okay. Pen is to write, phone is to call, duck is to rap, rhinoceros is to Dani. Where will we are placed? A B C D E F G H
G के एम एन ओ। अच्छा, ऊपर में 20, अच्छा नीचे एक, ऊपर 2, फिर से नीचे 3, फिर ऊपर ये चाहिए 4, फिर नीचे 5, ऊपर अप। और नंबर कम प्लेस, ये तो इसको ट्राई करते हैं। 3 क्वेश्चन बन गया तो मजा आ जाएगा। During summer vacation, all the Chepalas gathered at their person with a recent help to take care of the farmhouse. When the Chepalas came, he had the following observation: all the adults in the family have different jobs. Managers have 5 grandchildren, out of which 3 are among the remaining two. One of them like football, another like TT lawyers. How many families? नहीं बनेगा इतने टाइम में।1 hour starting from 9 a.m. till the last bus at 6 p.m. At what time Shyam left the house to catch the 11 a.m. bus? If it takes 18 minutes to reach the bus stop and 10 minutes to buy the tickets. At what time? मतलब 18, 10, 28 मिनट पहले, 11 am के 28 मिनट पहले, that means 60 minutes, 28, another 2, 32, 10:32. No, bus to interval 1 start on 9 a.m. till the last bus. At what time should Shyam leave the house to catch the 11 a.m. bus? If it takes 80 minutes to reach the bus stop and 10 minutes to buy the ticket. 28 मिनट तो टोटल लगता है, तो 11 am के 28 मिनट पहले ना निकलेगा। To catch 11 am bus, if it takes 18 minutes to reach the bus stop and तो यार 10:32 क्यों नहीं है ऑप्शन में? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अटेम्प्ट भी कुछ खास गया नहीं है, तो देखते हैं कितना आता है। ट्वेंटी 27.5, यार कल जैसा ही मार्क्स था। देखते हैं क्या कहाँ गलती हुआ है। अब चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मॉक में भी काफी कम नंबर आया है, और ओवरऑल देखें तो वर्बल में 7.75 स्कोर है। इसका एटलीस्ट तो 10-12 तो होना ही चाहिए था। 5 इनकरेक्ट कैसे हो गया वो देखेंगे।
क्वांट में टोटल अटेम्प्ट है हमारा 13, 20 क्वेश्चन में से। इसका तो अटेम्प्ट वाइज ठीक ही है, बट 2-3 क्वेश्चन और बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम लिमिट और बहुत घटाना पड़ेगा क्वांट में। और लॉजिकल में 8 मार्क्स। मेरा नेक्स्ट मॉक का टारगेट होगा 12 12 12, राइट, 12 12 12। मतलब हमें वर्बल में तो मैं पूरा 100% अटेम्प्ट करता हूँ, मतलब करने की कोशिश करता हूँ। और क्वांट में हमें इसी लेवल में पे रखना है अटेम्प्ट। और एक्यूरेसी पे थोड़ा एक इनकरेक्ट कैसे हो गया वो भी देखना है। और लॉजिकल में हमारा एक्यूरेसी तो ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट बढ़ाना है, 4 अटेम्प्ट और बनाने हैं, 4 से 5 अटेम्प्ट और बढ़ाने हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। इट्स अ पीस ऑफ केक मीन्स इट्स इजी, यहाँ ठीक है। माई फ्रेंड्स एंड आई विजिटिंग, ये भी ठीक है। ये गलत हो गया। देयर फाइनल एग्जाम कमेंसेस फ्रॉम। यार ये मैं फ्रॉम क्लिक करते करते बाई में क्लिक कर दिया, पता नहीं दिमाग में क्या आया। इन द above sentence the word and is interjection. Atul has both cows and pigs in his farm. Conjunction। अच्छा, फिर इंटरजेक्शन क्या होता है? Interjection. An interjection is a word or phrase that is grammatically independent from the words. Example बताओ भाई। Example है oh boy, ouch are common examples of interjections in noun form of the verb, which most probably means to interrupt or insert a comment. अच्छा, exclamatory sentences को interjection कहते हैं। ठीक है। एंटोनिम फॉर प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस का मतलब नहीं पता। प्रीपोस्टरस मीनिंग contrary to reason or common sense। एंटोनिम मतलब plausible। यस। ये पैराजम्बल फिर से गलत हो गया। लास्ट मॉक में पीजे गलत हुआ था। इस पे हमने कितना टाइम बर्बाद किया, 94 सेकंड्स बर्बाद किया। टॉपर ने 81 सेकंड। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ऐसे ही छोटे छोटे बूंद बूंद से सागर बनता है। तो पहला सेंटेंस क्या होगा? पहला सेंटेंस क्या आर बन सकता है? आर इन मिस्टर नेवलनी मिस्टर प्रिंस फाउंड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट इन हिज 2 डिकेड लॉन्ग रूल। हाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आर के बाद पी वंस नोन फॉर एक्सटर्मिनेशन मिस्टर नेवलनी। हाँ ये बन सकता है फर्स्ट वाला, आरपीक्यूएस। ठीक है। It's going to be all right for the guys who have studied year round. Grammatical error. It's going to be all right for the guys who have studied year round. 3 1 एपोस्ट्रोफी आएगा शायद, ये गलत है। हाँ एपोस्ट्रोफी आएगा, दिखा नहीं। एजुकेशन मिनिस्ट्री। यार ये आरसी कितना टफ आया था। देयर इज नो वन विजनेट। विजनेट मतलब क्या होता है? A brief evocative description account. There is no one vignette about the government's handling of the pandemic that says it all. But there will always be a broken place in my heart for the fact that at the end of the first lockdown, the government opened the pubs before the schools. Hey, give the Johnson administration a break. They would only had 3.5 months to think about it, which the likes of Gavin Williamson had instead spent not thinking about how to handle the looming exam results fiasco. Whether ministers will make more human
intelligent choices this time around for the millions of children in various stages of crisis is as yet tantalizingly unclear. The precedent set by their dealing with Marcus Rashford suggests that the government needs to make the same mistake many more times than an average primary school pupil before it learns. And so to Rashford, whose success in forcing government U-turns is increasingly infuriating backbench Tory MPs, and particularly those who represent themselves as red wall, from school meals to food hampers to perhaps the permanent universal credit. Top of the footballer has endorsed their frustration is broadly summarized by the question: why does the government keep proceeding against Marcus Rashford? Once the impossible has been eliminated, they might have to face the improbable truth that Rashford is simply better at it than them. The government has found it so difficult to know how to play Rashford for reasons that can only be guessed at, that they are largely settled into a rather excruciating form of sycophancy. Mm. On each of the unsuccessful outing against Manchester United forward, so far ministers have fallen over themselves. Salute him. Swear by him, and to judge, he is doing an incredible job. At the same time as voting against said incredible job. ये पैरा समझ में नहीं आया. The government has found it so difficult to know how to play Rashford. अच्छा. And that had largely settled into a rather excruciating form of sycophancy. On each of the unsuccessful outings, Manchester United forward so far instead of falling over themselves to salute him, to inspire by him, then to judge he is an incredible job. At the same time as voting against an incredible job. So last week, the Prime Minister further formalized the admiration, declaring that in comparison with the Labour leader, Rashford was doing quite ineffective in holding the government to account. Johnson using his own Dickensian incompetence as the joke certainly innovative. In private, however, there are reports that Bonhomie is failing. The Tories MP's education WhatsApp group has little with discontent on both this issue and the discontent performance at his colleague Gavin Williams and several MPs are said to have accused the government of dancing to Rashford's tune or giving in with the fact that he's a millionaire footballer. Either mentioned disparagingly or in ways that suggest success disqualifies him from speaking on the subject. Somewhat confusing to find conservative practice in both the ways of political envy and politics that decries aspiration. Why do they hate football so much, given that the top flight of the game is an engine of social mobility, levels up a lot of talented and dedicated working class men into millionaires? Perhaps the answer is in this question. It certainly can't be that millionaires are per se the sort of people whose conservation politicians believe shouldn't be listened to. After all, huge swaths of conservative policy has been formulated as a direct result of listening very hard. Then over the past 10 months of the pandemic, huge numbers of private contracts have been outsourced to them. What can be justified of a profession of Gavin Williamson? Gavin Williamson एक जगह पे mention है वो भी content on both this issue and continuing performing art piece called Gavin Williamson. Several MPs are said to have accused the government of dancing. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या फिर ये दोनों में से कोई हो सकता है. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यार ब्रिटिश लॉ में कर एक सेकंड आंसर देखते हैं. From which the likes of Gavin Williamson had instead spent no thinking. अच्छा यार ये यहाँ पे भी एक मेंशन था. For which wants to think about it, which the likes of Gavin Williamson has been instead. अच्छा हाँ ये तो फॉर एजुकेशन मिनिस्ट्री समझ में आ रहा है. इसमें क्या मैं क्यों नहीं कर पाया मैं ये क्वेश्चन सही. इसको मैंने ढंग से पढ़ा नहीं पैसेज को. The absolute difference in degrees between the external angle of a regular hexagon. एक्सटर्नल एंगल मतलब 180 माइनस इंटरनल एंगल ना. तो रेगुलर हेक्सागन का इंटरनल एंगल कितना होता है. रेगुलर हेक्सागन का इंटरनल एंगल होता है 6 - 2 into 22/7 by
6 equals to 4 into 22 by 7 into 6. तो ये आ गया हमारा 44/21. तो ये है each interior angle of an n-sided polygon. यार रेगुलर हेक्सागन का तो इंटीरियर एंगल 360/6 कितने वर्टिसेस कितना होता है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 60 डिग्री होना चाहिए एक एक. तो 180 minus 60, that is 120 degree, minus internal angle of a regular pentagon, that means 360/5, that is 5 7 32 32 36 1 10 5 2 10 72. 180 minus 72 is 120 minus 72 is 48. तो इजी था यार, पता नहीं दिमाग में क्या आया, तभी क्या क्या करने लग गया था. A certain number of money is invested. Simple interest becomes twice of itself in 5 years. In how many more years? That means 4 more years बोला है. क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा. तो सही है ये वाला. The income of A and B are in the ratio 4:5 and the expenditures are in the ratio 5:4. The savings are in the ratio 1:2. Find the ratio of the absolute difference between their incomes and the absolute difference between their expenditures. अच्छा, पहले A, B, income, expenditure, savings. A का 4x 5x, expenditure 5y 4y और Z 2z. 4x minus 5y equals to z. 5x minus 4y equals to 2z. ये दो इक्वेशन है और एक और इक्वेशन चाहिए. 3 वेरिएबल है ना. एनीवेज देखते हैं इससे क्या बन सकता है. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा -x -5 plus 4 is -y equals to -z. That means x plus y equals to z. x plus y equals to z, ये हमारे पास आया एक. और दूसरा है 8x plus 10y equals to 5x plus 4y. Hence 4x equals to 3x equals to -6y. X equals to -6y by 3 equals to -2y. X equals to -2y. तो इसको इस इक्वेशन में डाल के देखेंगे तो -2y plus y equals to z. That means -y equals to z. Z equals to -y. X equals to -2y और y तो y है ही. तो हमारे हम अपने को क्या निकलना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द इनकम्स. एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द इनकम्स 4 into -2y minus 5 into -2y equals to -8y plus 10y equals to 2y. डिफरेंस इनकम का डिफरेंस ये है
difference between their incomes and the absolute difference of their expenditures. Expenditure के absolute difference तो है भैया 5y minus 4y, that is y 2:1. 2:1. For the number of even factors, इसको मैं आता था यार, मैं भूल गया even factors कैसे निकालते हैं. So even fact we don't consider the 0th power of 2. Therefore, total number of even factors comes out as for even factors we don't consider 0th power of 2. That means total factors it comes out to be 13 into 4 plus 1. अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे करते हैं. मतलब 2 cube into 3 to the power 4 into 4 to the power 5. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 cube into 3 to the power 4 into 2 power 10. तो ये बन गया 2 power 13 into 3 to the power 4. इसको इवन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज, अगर 2 का 0th पावर हम लोग कंसिडर नहीं करते, मतलब अगर यहाँ पे 13 है 2 to the power 13, अगर 0th पावर कंसिडर करते तो ये 14 हो जाता, लेकिन 0th पावर कंसिडर नहीं करेंगे तो 13 रहेगा. 13 इंटू ये 4 बन जाएगा 5, 3 to the power 4 बन जाएगा 5, क्योंकि इसका 0th पावर कंसिडर कर रहे हैं. तो 65 बन गया. 65. ओके. What is the remainder when 1025 square plus 1024 to the 1024 is divided by 100? इसको ये तो मैंने किया ही नहीं. इसको मैं इग्नोर करूंगा. ये वाला log 2 plus log 4 plus log 8 plus log 16 plus log 2, and if log 2 equals to x, log 2 equals to x, then n को हम लोग लेते हैं सपोज 4. ठीक है, तो 2 to the power 4 बन गया 16. तो 16 तक अगर हम लोग बनाएंगे n equals to 4, then x into log 4 है हमारा 2 into log 2, that means 2x, x plus 2x plus 3x plus 4x equals to 4 3 7 8 9 1 10 10x. अब ऑप्शन में से देखते हैं. एकदम निचले वाले ऑप्शन में 4 into 4 plus 1, 4 into 5 20x, नहीं ये है 4x, नहीं n into n plus 1 into 2n plus 1x by 6, 4 into 5 into 8 plus 1 9 by 6 है क्या सर. 2 3 4 2 4 3 3 9 plus the probability 30, नहीं n into n plus 1, एक ही ऑप्शन बचता है, ये होना चाहिए. हाँ, नंबर ऑफ वेज, ऐसे क्वेश्चन से मुझे सख्त नफरत है. टू सीज ऑलवेज कम टुगेदर. तो अगर दो सी को हमेशा एक साथ रखना है तो इससे इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं. तो दोनों सी को एक टर्म ट्रीट करेंगे. तो ये वी ए आई एन ई टोटल कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस में 6 जगह पे आ सकता है. टोटल है 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल.
तो ये 6 फैक्टोरियल। area enclosed by graph x less than 2 y less than 2। ये मेरे को नहीं पता। ये 52,000, ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, क्वांट का एनालिसिस हो गया फिलहाल। अब थोड़ी देर बाद ये लार्ज सेक्शन एनालाइज करने के बाद फिर टाइम एनालाइज करेंगे। ये वाला ना, ये वाला यार इतना बड़ा कितने कैसे दे सकते हैं ये लोग, थोड़ा छोटा देना चाहिए था। खैर, there are 8 friends and each of them plays a different game. The game are snooker, table snooker, table tennis, volley, cricket, football, chess, kho. One day they met for a brunch and sat on the edges of table, which is in the shape of a regular octagon. And they are facing towards a pen, which is at the center of the table. अच्छा, मतलब सीधा भाषा में, सरल भाषा में, ये लोग एक ऑक्टागन टेबल में बैठे हैं। ठीक है, तो there are 2 married couples and husband and wife sit next to each other. वड़ा पाव इस वड़ा, अरे बाप रे, फूड आइटम भी है। ये है, ये तो हो गए गेम्स, फूड्स है। क्या क्या है, वड़ा पाव is ordered by person who plays football sitting next to the opposite to the person who ordered egg roll, noodle, डोसा, और क्या, बर्गर, और कौन है, समोसा। कितने हुए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 और भी 2 आइटम है खाने के। इडली सैंडविच, इडली और सैंडविच। ठीक है, अब मिलाते हैं। देयर आर 2 married couples and husband and wife, 2 married husband wife adjacent। लिख लेना ज्यादा फायदेमंद रहता है। वड़ा पाव is ordered by the person who plays football, वड़ा football, and sitting opposite to the person who ordered egg roll, opposite to egg roll। One of the married couples ordered noodle and dosa, one couple noodle dosa। One of the married couples played table tennis and snooker, one couple table tennis, snooker। Table tennis is player is sitting 2 places right of the football player, table tennis 2 places right of football player। That means football dash table tennis।
And table tennis plays two places right. A football player and ordered burger. Table tennis player ordered burger. Person who ordered samosa is sitting three places to the right of the person egg roll. Egg roll dash dash samosa. Also, this person, that means the samosa wala. This person is sitting opposite to the unmarried person. Acha, opposite to the unmarried person. Married men are sitting opposite to each other. Married men opposite. Cricket player is the only person sitting between the person who ordered vada pav and dosa. Vada pav, cricket, dosa. Chess player ordered idli. One of the friends ordered sandwich. Chess player idli और ठीक है. चेस प्लेयर इडली. अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे. ठीक है. वड़ा पाव, क्रिकेट, डोसा. अच्छा. एग रोल डैश डैश समोसा. अच्छा, नूडल डोसा. तो नूडल वाला क्रिकेट हो सकता है. बना देते इसको नूडल क्रिकेट. टीटी स्नूकर. दैट मीन्स मैरिड मेन आर ऑपोजिट. मतलब यहाँ पे मेन कौन है यहाँ पे. हाउ डू आई नो हु इज मेन हु इज वुमेन. वड़ा पाव फुटबॉल खेलता है. उसका ऑपोजिट में ऑपोजिट वाला एक खाता है. एग रोल. अच्छा, एग रोल डैश डैश समोसा. डैश डैश ये खाएगा समोसा. फुटबॉल डैश टेबल टेनिस. फुटबॉल डैश टेबल टेनिस. टेबल टेनिस बर्गर खाता है. फुटबॉल डैश टेबल टेनिस. टेबल टेनिस वाला बर्गर खाता है. बर्गर BURGER होता है. तो एक कपल टीटी और स्नूकर खेलता है. तो मतलब स्नूकर यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं भी आ सकता है स्नूकर. चेस वाला इडली खाता है. चेस इडली. एक सेकंड. फुटबॉल के राइट में ना. फुटबॉल तो के राइट में तो यार ये डोसा है. टीटी वाला बर्गर कहाँ से खाएगा.
क्रिकेट डोसा, अच्छा मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। वड़ा पाव, क्रिकेट डोसा। वड़ा पाव, क्रिकेट डोसा। अच्छा, अब कनेक्टर है। नूडल डोसा एक कपल है, तो नूडल क्रिकेट के पास साथ आना चाहिए। नूडल। और एक और केस बना ही लेते हैं एक साथ। तो क्या है कि ऐसे प्रॉब्लम्स में, केसेस में फंस जाते हैं। तो डोसा, क्रिकेट, वीपी। तो noodle in this case will particularly be here. noodle। अच्छा, अब देखते हैं क्या है। फुटबॉल डैश टीटी, एग रोल डैश डैश समोसा। वड़ा पाव फुटबॉल खेलता है। वड़ा पाव फुटबॉल खेलता है और उसके ऑपोजिट में एग बैठा है। एग। एग रोल डैश डैश समोसा। एग रोल डैश डैश समोसा। यहाँ पे तो क्रिकेट बैठा है, सॉरी नूडल बैठा है। दैट मीन्स नूडल यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे कौन आएगा? समोसा आएगा। दैट मीन्स क्रिकेट आएगा, सॉरी नूडल आएगा यहाँ पे। डोसा नूडल एक कपल थे। ठीक है, और क्या इन्फो है? फुटबॉल डैश टीटी। फुटबॉल डैश टीटी। फुटबॉल डैश टीटी यहाँ पे हो सकता है। टीटी और स्नूकर एक कपल है। फुटबॉल डैश टीटी हो सकता है, फुटबॉल डैश टीटी यहाँ पे भी हो सकता है। टीटी। टीटी और स्नूकर कपल है। यहाँ पे भी स्नूकर आ सकते हैं, यहाँ पे भी स्नूकर आ सकते हैं, कहीं पे। लेकिन अगर ये वाला केस रहा तो डोसा नूडल एक कपल है, मतलब टीटी और स्नूकर वही वाले कपल है। स्नूकर। और क्या है? वड़ा पाव फुटबॉल एक यूज कर लिया। वड़ा पाव फुटबॉल एक यूज कर लिया। वन कपल नूडल डोसा टीटी स्नूकर फुटबॉल डैश टीटी। फुटबॉल डैश टीटी ये भी यूज कर लिया। फुटबॉल डैश टीटी। फुटबॉल के राइट साइड में टीटी है भाई, यहाँ पे नहीं आ सकता। फुटबॉल के साइड राइट में टीटी टी टी। यहाँ पे कहीं स्नूकर आना चाहिए। दैट मींस ये वाला केस नहीं पॉसिबल है। स्नूकर यहाँ पे बैठा है, चलो इसके वाले केस में यहाँ पे बैठा है स्नूकर। दो में वन कपल डोसा टीटी स्नूकर फुटबॉल डैश टीटी बर्गर। टीटी वाला बर्गर खाता है, बर्गर। टीटी वाला बर्गर खाता है। एग रोल डैश डैश समोसा। एग रोल डैश डैश समोसा ही तो यूज कर लिया। मैरिड मैन अपोजिट, लेकिन मैन कौन है, वुमेन कौन है हमें नहीं पता।
Cricket player is the only person sitting between the person who ordered vada pav and ये तो सबसे पहले यूज किया। चेस वाला इडली खाता है, चेस जो खेलता है वो इडली खाता है। इडली, चेस। तो हमारे पास स्नूकर चला गया, टेबल टेनिस चला गया, टेनिस बचा है, वॉली बचा है, क्रिकेट, फुटबॉल, अरे टेनिस, वॉली और खो खो बचा है। टेनिस, वॉली, खो खो कहीं पे भी हो सकता है। टेनिस, वॉली, खो खो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर एंड फूड ऑर्डर्स आर पॉसिबल? बहुत सारे कॉम्बिनेशन यार। 6। Which food item was ordered by the person who bought burger? वाला कौन सा फूड आइटम? स्पाउस ऑफ द पर्सन हु ऑर्डर्ड बर्गर। अच्छा, स्नूकर, चेस नहीं। अच्छा, एक ही बचा है, वो है वड़ा पाव बन गया, एग रोल बन गया, नूडल बन गया, डोसा बना, डोसा, हाँ डोसा भी बन गया, बर्गर बन गया, समोसा बन गया, इडली बन गया, सैंडविच, सैंडविच। Which of the following is true for cricket player? क्रिकेट प्लेयर के लिए कौन सा सत्य है? क्रिकेट वाला समोसा खाता है, समोसा। बस 3 क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत करना पड़ा। उसमें से भी एक क्वेश्चन गलत किया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला। ठीक है, ये अटेम्प्ट नहीं करके अच्छा किया। ये इसको करने में मेरा लगभग मिनिमम 15 मिनट्स चला जाता। आई थिंक इट वाज दिस पर्टिकुलर सेट वाज नॉट मेंट टू बी टच्ड, राइट? लेकिन फिर टच करने वाले कौन से क्वेश्चंस थे, देखते हैं। 1 second, आई एम रबिंग दिस पेज। हाँ, पेंसिल से लिखा था। और ओके, ये वाला क्या, इसको मैं कितना ट्राई किया। लिलीपुट 223 444 5, LILIPUT। The output is number in ascending order. Tanya, A is repeated twice and its output 1 is repeated. Thus A is coded as 1. T and Y will be 345. From Nitya we know A equals to 1. Then NITY will be coded 2 3 4 5. 1 and 2 we can tell. 2 1 is coded as 2 till we know 1 to 2. Thus T and L are coded as 4. The impedance is following and Y will be coded 3 5. लेकिन यार ये कैसे हो सकता है? LILIPUT, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड है जो 3 बार रिपीट हुआ है? L 2 बार रिपीट हुआ है, I 2 बार रिपीट हुआ है, PUT एक एक बार आया है, तो 2 2 3 444 कैसे आ गया?
अच्छा, मतलब दो वर्ड एक ही वर्ड शब्द में कोडेड है, तो ऐसे में फिर तो ट्रिपल फोर TILL ये ये थोड़ा घटिया वाला है, इसको स्किप करते हैं। ये रहा, इसको करते हैं। During the summer vacation, Chipalas gathered at the farmhouse. Prasoon is a decent help hired to take care of the farmhouse. When the Chipalas came, he had the following observation. All the adults in the family have different jobs. अच्छा, manager has 5 grandchildren. ठीक है, दादाजी मैनेजर है। उसके 5 grandchildren, 1 2 3 4 5, out of which 3 are infants. 3 are infants. Infant. Among the remaining two, one of them likes football, one likes table tennis. Football, one likes table tennis. Lawyer is married to doctor and has 2 children. One of them is an infant. Lawyer is married to doctor and has 2 children. Lawyer, doctor, 2 children. One of them is infant. ठीक है, one of them is infant. Suppose ये वाला infant है. NGO worker has 2 daughters-in-law and 1 daughter. मतलब जो एनजीओ वाला है मैनेजर का पत्नी है। NGO worker has 2 daughters. 2 daughters. सॉरी, 2 daughter-in-laws मतलब 2 बेटा है और 1 बेटी है। उनके 2 sons, 1 daughter. Physicist is the sister of engineer. Is the sister of engineer and is unmarried. Physicist इनका 1 बेटे। Physicist unmarried है, is the sister of engineer. Engineer, ये sister of engineer. Son of engineer and entrepreneur, likes to play TT. Entrepreneur likes to play TT. To play TT. All married couples have at least 1 child. ठीक है. Lawyer is not related to blood by physicist. मतलब डॉक्टर, that means ये भी बेटा है, ये बेटी है. डॉक्टर और इंजीनियर भाई भाई. एंटरप्रेन्योर फीमेल, फिजिसिस्ट फीमेल. ओके, डॉक्टर का. There are 3 married couples in the family. 1 married couple, 2 married couple, 3 married couple. Manager has 5 grandchildren, out of which 3 are infant. अच्छा,
Among the remaining two, one like table tennis and one like football. It means this वाला is football और बाकी तो infant, infant, infant. Which of the following definitely falls for the child who likes to play TT? ये entrepreneur engineer का बेटा है. Doctor is his uncle. Definitely false मांगा है. Uncle तो सही बात है. One of his siblings like to play football. Definitely false. Sibling तो नहीं है यार. ये तो cousin है. Mother is working as an engineer. Physicist is his aunt. ये वाला. Oh, sorry. Father is working as an engineer. One of his siblings like to play football. कोई बात नहीं. सही फिगर सही बनाया. गलत आंसर दे दिया. How many family members are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. What is the relation with entrepreneur and lawyer? Entrepreneur तो बहू है और लॉयर भी बहू है तो sister in law. If manager is male, then how many gender of how many members are known? Manager is male, NGO वाला female. बच्चों का क्या दिया है? बच्चों का कुछ दिया है क्या? Medical person not related to one child son of engineer and entrepreneur like to play table tennis. This is plus sign. Your work has 2 daughter-in-law and 1 bus. Football. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. ये भी सही है. In the following question and statement is following implicit explicit assume करना है. So the statement and the following assumption decide which of the assumption is implicit statement. I tend to attend Taylor Swift's concert. Assumption: I like listening to Taylor Swift only. Taylor Swift has a great personality. None are implicit. None are implicit. Ram works for 9 days and then takes a day off. 9 दिन काम करते 1 दिन छुट्टी मारता है. If Ram works working on Monday, after how many minimum weeks should he have? Yes. Would he again start working for 9 consecutive days starting from Monday? इसको कैसे करेंगे? Ram works for 9 days and takes a day off. ठीक है. मंडे से स्टार्ट किया, 9 दिन काम किया, मतलब नेक्स्ट मंडे तक हुआ हमारा 8वां दिन. ट्यूसडे तक काम किया, फिर वेडनेसडे छुट्टी मारा, फिर थर्सडे से शुरू किया. 1 सेकेंड. मंडे स्टार्ट किया तो स्टॉप किया. मंडे से मंडे तक 8, ट्यूसडे 9, मंडे टू नेक्स्ट ट्यूसडे, मतलब वेडनेसडे छुट्टी. फिर नेक्स्ट थर्सडे से स्टार्ट किया, फ्राइडे, थर्सडे से फ्राइडे तक काम किया, सैटरडे छुट्टी. फिर अगेन संडे से लेके मंडे तक काम किया, ट्यूसडे छुट्टी. फिर से वेडनेसडे से थर्सडे तक काम किया, फ्राइडे छुट्टी. फिर सैटरडे से लेके संडे तक काम किया, मंडे छुट्टी. तो जैसे कि हम देख रहे हैं एक एक साइकिल में वेडनेसडे, सैटरडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2-2 करके जा रहे. तो
वेडनेसडे तो यार ये बनेगा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। मैं यहाँ पे छुट्टी लेना है संडे। अच्छा मंडे, फिर उसके बाद आएगा थर्सडे, फिर थर्सडे संडे। हाँ तो कितना काम किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, नहीं 10। Let Monday be day 1, Tuesday be day 2, Sunday be day 7, and then again Monday will be day 8. Thus, Sundays will be on 7 and today. From Monday to be the day Ram again starts working, Sunday has to be the rest day. We know every 10th day is a rest day. Thus, 10k equals to 7 and possible n equals to 10. 70th day is Sunday. After 70 days, Ram will again starts working on Monday. This equals to 10 weeks. So, that's it. If the mirror image of the clock was 4th, then the actual time would have been the mirror image of 8, which is 8. अच्छा अच्छा, if the in the mirror the clock hand rotated in opposite direction, 15 minutes is 4 minutes. 10 minutes after 4 is 15 minutes before 8. 7:45. अच्छा ये बात है, ठीक है समझ गया। हम्म। A project is given to ABC to finish. If the work continuously, A can do one is this day, B can do in this day, C can do in this day. They work in such a way that on any day two people will work. No person can work 3 days consecutively. The project will be completed on which day? Depends on who started on day one, of course. अरे एक सेकेंड। देखते हैं इसे करके। ए लेता है 168, बी लेता है 120, सी लेता है 210। इन तीनों का एलसीएम बनता है 210, 168, 120। शुक्रिया को 10 बचे 10 8 16 4 3 6 12 5 बचे 5 3 3 3 9 9 2 6 5 15 3 2 6 6 7 2 8 24 3 20 60 7 5 35 7 4 28 7 20 20 2 5 5 2 2 4 2 10 20 2 5 5 2 1 2 2 5 10 5 1 5 5 1 5 1 5 5 1 5 के 5 10 2 20 20 7 140 140 into 6 that is 46 840 840 by 168 840 by 168 is nothing but I think 168 into 5 क्या सॉल्यूशन में थे 4 5 3 4 शून्य थे 4 5 3 4 4 3 5 5 840। हाँ तो 5 120 by 40 by 120 12 7 210 840 by 200 7 3 21 7 20 7 8 7 2 14 3 4 about 4 the work in such a way that on any day only two people will work. No person can
work on 3 days consecutively. में केसेस बनेंगे. केस 1 इज ए स्टार्टेड द वर्क. पहले सबसे पहले ए स्टार्ट किया काम. सपोज पहले दिन ए और बी ने काम किया 12, उसके बाद 11, उसके बाद लेट्स से 9, उसके बाद अगेन 12, 11, 9, ऐसे करके करके कितने दिन में काम होगा? ये हर 3 दिन में 8 12 प्लस 20 32 यूनिट्स काम हो रहा है, तो 840 by 32. 8 32 8 40 21.66. 10 into 3 is 18. यार ये वाला थोड़ा टफ लग रहा है. let total would be 4574. Yeah कर लिया. Irrespective of who starts first in 3 consecutive day work done by them equals to 32. ये भी यहाँ तक भी कर लिया. Irrespective of who starts first. अच्छा ये बात है. हाँ. Number of 3 days 42 26.25. अच्छा 4 32 8 की 8 45 4 32 8 की 8 8 45. तो ये बन गया 4/105. 4 2 8 8 में 10 2 25 4 6 26.xx into 3 26 into 3 6 के साथ 78 79th डे करेक्ट. 79th. ये हुआ क्यों नहीं तब? ये दिमाग में नहीं आया. इजी तो था. Ram starts moving from P to Q at 10 am. ठीक है, मतलब 1 आवर्स में सीता जितना कवर करती है वो x+2 आवर्स में करता है. तो x is to x+2 है रेशियो. 5:6 3:7 1:4 2:7. Since R is the midpoint, then they both covered the same distance. Time taken by Sita less than time taken by Ram. Thus, speed of Sita greater than Ram, greater than 1. अच्छा ये बात है. Pen is to write, phone is to call. ठीक है. Duck is to left, rhinoceros is to, I think this is truck. नहीं, crash of rhinoceros. Okay, ठीक है. What will they come? 7. Shit, ये तो easy था.
इसको ये हो जाना चाहिए था। Value in the middle triangle equals to 2 plus arithmetic mean of other triangle values. Middle triangle is to 2 plus arithmetic mean. अच्छा, the average 2 plus 10 plus 14 by 3 equals 14. अच्छा, ये बात है. 10 plus 2 30 plus 30 60 by 3 is 20. 30 plus 2 is 30, sorry 20 plus 2 is 22. ठीक है. So this with this our analysis ends. तो ओवरऑल एनालिसिस का हमें ये पता चला कि करके कि ये पता चला कि हमारा लॉजिक सेक्शन बहुत खराब है, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा कैसे भी करके. और स्पेसिफिक कुछ कुछ क्या बोलते हैं टॉपिक्स मेरा वीक रह गया, तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव देम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें मुझे इन जनरल स्पीड बढ़ाना पड़ेगा बहुत, जो क्योंकि यार 4 अटेम्प्ट तो इजीली बन जाते हैं ना. देखो यहाँ पे अपन ने ये वाला तो नहीं बनता, हमें 4 ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं जो बनना चाहिए था. ये भी कंफ्यूजिंग है. ये वाला बनना चाहिए था, ये वाला बनना चाहिए था. 1 2 3, मतलब बड़े बड़े सेट में से एक सेट तो होना ही चाहिए था. ये हो जाता, ये भी हो जाता. ये वाला नहीं बनता मेरे से. ये वाला भी नहीं बनता. 79, ये वाला बन जाता थोड़ा स्ट्रगल करने पे. ये वाला मैं समझ ही नहीं पाया क्या कॉन्सेप्ट क्या है. ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, और ये बन जाता. मतलब और भी 4 से 5 क्वेश्चन थे जो बन जाते. और लॉजिक में हमारे पास क्वेश्चन भी ज्यादा है. 5 इंटू 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 25 क्वेश्चन. इसमें से हमने कितने अटेम्प्ट किए? 1 2 3 4 5 6 7 8. नेक्स्ट टाइम हमको 25 में से एटलीस्ट 13 टू 15 टारगेट करना है अटेम्प्ट. ओके, तो इसी के साथ. और क्वांट का क्या है? क्वांट में हमने 20 में से कितने अटेम्प्ट किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 में से एक गलत, 12 करेक्ट. ये ठीक ठाक है. इसी को मेंटेन करके और अगर हो सके तो 1 2 बढ़ाना है, और टाइम बहुत घटाना है क्वांट में. नेक्स्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी ये रखते हैं ना कि 10 से 15 मिनट नहीं, आधा घंटे में, आधा घंटा, हाँ, आधे घंटे में क्वांट और ये इंग्लिश खत्म हो जाना चाहिए. फिर 30 मिनट्स देके आराम से लॉजिक लॉजिक सॉल्व करेंगे. ओके, सो दिस दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.